Hi, good evening. We will revise what we have covered in the last lecture in first 10 minutes. Today's session is more and more about applying the formula, applying the concept of maxima minima, plotting the graph, finding nature of roots. So today we are going to practice a lot. So we started with quadratic equations yesterday. We observed that the first coefficient should never be zero. It is either positive or negative. If the first coefficient becomes zero, it becomes a line, straight line, or linear equation. So when A is positive, it is an upward graph. When A is negative, it is a downward graph, a basically U kind of shape. Then I plotted for you another graph, x square minus 12x plus 32. I replaced couple of values, 7, 8 values for you. I told these are the root points. I want you to learn one more unique property. I've shown you in earlier slides that maxima or minima occurs at the midpoint. What is the midpoint of 8 and 4? 4 plus 8 upon 2. The midpoint is 6. That midpoint is minus of this, 12, upon 2a, which is 6. So either you say a plus b upon 2 is equal to x will give me maxima minima, or you can also say x is equal to minus b by 2a will give me maximum minima. You put 6 in this, you put 6 in this, you will have the lowest point minima. One advanced property I want you to observe is this is an even degree graph, even powered graph, even degree graph. It will always be symmetric from here. You see, this is 6. This is 6. When I go one step back, it is 5. When I go one step forward, it is 7. When you replace values, you will find f5 will be equal to f7. When I go one step further, it is 4. One step further forward, it is 8. So do you see f of 4 is equal to f of 8? What I am trying to tell you here is in any even powered equation, this is advanced extra. We'll see this further in later lectures. For any even powered graph, if it is given to you as f of x1 is equal to f of x2, the power must be even. Then x1 plus x2 is always addition of roots. What is 5 and 7? Addition of roots, 12. What is 4 and 8? Addition of roots. What is 3 and 9? Addition of roots. You put 3 in this, you notice what when you put 3 in this, the value is 5. When you put 9 in this, you will again have the value 5. So even degree graph is always symmetric from its mid of the root points. If it gives you f of x1 plus f of x2 equal, you can always say addition of roots is x1 plus x2. It will work on degree 2, degree 4, degree 6, degree 8 equations. I can show you advanced application of this in CAT 2 years back. लिख लो इसको, confirm, done.
Comment done. Basically, an even powered equation is symmetric about its peak point, maxima or minima. And peak point is always the midpoint of roots. Moving on. Okay, moving on. So a downward graph is there when this is negative. Then I showed you what does it mean to factorize. This is called the factorized form. X minus a into x minus b is equal to 0. When you open these brackets, you get this equation. Addition of the two roots is always with x. A plus b is with x with a minus sign. And product of two roots is always at the end. So I showed you a couple of examples of factorization. Two examples we have covered yesterday. Rough graph plotting as well. Then completing the square is fairly useless. You would either go for a formula or you go for factorization. So completing square is useless. Why? If there's a coefficient here or if the value in the middle is odd, it becomes unnecessarily difficult to work with. I was giving you another example that this kind of thought process is used to complete squares in coordinate geometry. So the coefficient of x square is 1. Look at the coefficient of x, take half of that. Add the square, subtract the square. Coefficient of y square is 1. Look at the y coefficient 8. Half of that is 4. So you add 4 square, you subtract 4 square. So this will complete the equation x plus 3 whole square, y plus 4 whole square, and rest of it is remaining. 12 minus 9, 3. 3 minus 16 is minus 13. So equal to 13. This is the complete equation. So here, because there are perfect squares, it is easier to solve. It is easier to work with. Now, the formula method, when the equation is given to you as ax square plus bx plus c, in that case, the formula method of finding roots is minus b minus root over b square minus 4ac by 2a. All of this we have already covered, so I'm just revising it for you. So here on the right side, what we have, delta, discriminant. This tells us a lot of things about the So we have seen this. When A is positive, the graph is upward. Graph goes up. Delta is negative. It is called condition of imaginary roots. Roots are in the conjugate pairs. When delta is equal to 0, that is called the condition of real and equal roots. And the quadratic equation is a perfect square in this case. When delta is more than 0, roots are real and distinct. So whenever somebody says roots are real, if only the wording is real, you take delta more than equal to 0. Only when the wording is roots are real, equal to 0 gives me real, more than 0 gives me real. So you take both conditions. Here you see, when A is negative, the graph is downward. Same conditions, imaginary roots. In imaginary roots, the graph never touches the x-axis. Look at this, imaginary roots. Look at this, imaginary roots. The
the x-axis is never cut or touched by the graph itself. When delta is equal to 0, that is the condition of real and equal roots. Here also, the equation will be a perfect square, with a minus sign, because the graph is downward. It will be a perfect square of x plus 2, x plus 3, x minus something of that sort, with a minus sign in front. When delta is more than 0, the graph is downward. It will cut the axis at two distinct points, real and unequal roots. Then I showed you it is minima of the graph or maxima of the graph. It will always appear at minus b by 2. In both cases, it is minus b by 2a. So what is that minus b by 2a? That is the midpoint of the two roots. Even if the roots are imaginary, the midpoint is a plus b by 2 for imaginary roots also. So it does not matter what is the nature of roots. You can always find maxima or minima of the graph at minus b by 2a. This part I want you to copy down neatly. Comment done. Still, the issue with internet persists. Chalo. So copy this down. Copy down this entire slide. Done, eh? Yeah, complete
copy the content from the screen. Sure, let us pick up some questions now. Yeah. So go on, try. Every slide has 2 questions, 3 questions, 2 questions, 3 questions. All you have to do is perform calculations. You have to find roots. You have to also notice nature of roots. If you can notice nature of roots, you will get some idea about graph as well. Very nice. Second one. So here, when the numbers are very small, I suggest factorization as an effective approach. If you look at this, don't look at the minus sign. The addition of two numbers must be 11 and multiplication of same numbers must be 28. So by trial error, you can see 28 is a multiple of 4 and 7. So 4 plus 7 is 11. So roots are 4, 7. Yes, very good. Now this kind of observation or approach becomes slightly difficult here, but it is not impossible. Let me give it a try. For second question, question B, first of all, what is addition of roots? Minus of the middle term upon the first. So minus of minus 13, 13 upon 6 is the addition of roots. What is multiplication of roots? It is last value upon the first value. Don't alter signs. 1. So here students start to panic because you're dealing with decimals and fractions. So whenever a into b is equal to 1, they are inverses of each other. So if you apply some trial and error, what is 6? 6 is formed by 2 into 3. So you try this. 2 upon 3 plus 3 upon 2. Does it match 13 upon 6? It is trial error. Because multiplication will definitely give you 1. So a into b is equal to 1 is very easy to match. कैसे hint लगा? Denominator is 6. 6 can be written as 2 into 3. तो I felt अगर नीचे 2 है तो ऊपर 3 होगा, नीचे 3 ऊपर 2 होगा, तो that matches. So I found out the roots like this. But is it feasible? So there is a, अभी थोड़ा ध्यान सुनना. There is an advanced approach when there's a coefficient. I'm teaching you this in a newer manner. See, you change the sign of the middle term
and don't divide by 6. Don't do that. When you look at multiplication, multiply first and last. First into last is 36. Can I say 36 looks like 4 into 9 and 13 looks like 4 plus 9? But the actual roots are not 4 and 9. The actual roots are the first term will divide both 4 by 6 and 9 by 6. So actual roots are 2 by 3 and 3 by 2. When there's a coefficient in front, you multiply first and last and you take it as product of roots. Middle term you don't change. Middle term you leave it to the sign. You change the sign but don't divide. And once you get those roots 4 and 9, any other number, you divide back by the first term. First term was 6. Were you aware of the method that I just covered? Learn this method, copy this down. Otherwise, if you are good with calculations, always go with the formula approach. Always. Calculations आपसे बनता है, directly go for formula. Moving on from this, chalo, try. अगर आपसे फैक्टराइज होता है, go for it. नहीं होता है, always keep the formula method ready. Try C and D. So here, first 5-6 questions are like this, simply applying the formula, finding the nature of roots. One thing I want you to learn, whenever the sign of first and last term is not the same, A is positive, C is negative, or A is negative, C is positive. In both cases, the roots are always real and distinct. Highlight kar lo. When the sign of A and C is not the same, roots are always real and distinct. Always. तो यहाँ पे माइनस है, सामने प्लस है, तो रूट डिस्टिंक्ट है. अब इंटीजर है या नहीं है, कैन यू फैक्टराइज दिस और नॉट, दैट मैटर्स. ऑल ऑफ दैट विल मैटर. Observe. So addition of roots, I am solving C. Addition of roots is equal to -2. Multiplication of roots -8. This makes me feel the larger number is negative. आप दो नंबरों को ऐड करके माइनस ला रहे हो. So what are the possibilities? -4 plus 2, -4 into 2. These are your roots. One of the roots is -4, other root is 2. आप वेरीफाई करना चाहते हो, you can put -4 and देखो ये 0 हो जाएगा. You put 2 and you see ये 0 हो जाएगा. You can verify in this manner also if you like. D. Just now I told you, addition of roots, change the sign of middle.
middle term minus 16. Multiplication of roots, multiply first and last. 6 into 6 minus 36. Now what numbers can you think of जो add होके minus 16 बनते हो और multiply होके minus 32? Now you have to apply trial error थोड़ा सा. This appears to me as minus 18 plus 2 minus 18 into 2. Now the roots are not minus 18 and 2. What are the actual roots? Minus 18 by 6 minus 3 plus 2 by 6 1 by 3. These are the roots. One more observation. Whenever A and C are equal, forget the sign, A and C are equal. Whenever A and C are equal, the roots will be 1 upon of each other. Plus minus चलता रहेगा. See, A is equal to 6 and C is equal to also 6 with the minus sign. The roots are 3 and 1 upon 3. Plus minus आप handle कर लेना. Roots are inverse of each other when A and C are equal. You won't believe ऐसे ऐसे properties CAT में test हो रहे हैं अभी. Roots are inverse of each other when A and C have equal magnitude. Moving on from these. So in both cases, roots are real and distinct. अलग-अलग roots हैं, distinct roots हैं. In both cases, roots are real and distinct. Try these. Here you notice the delta for the first equation. This is b square 4 minus 4ac. So here that is 4 minus 52, which is minus 48. So roots are imaginary. For second one, what is delta? Middle ka square 36 minus 4 into first into last, 4 into first into last, 36 minus 52 minus 16. In both cases, roots are imaginary. When roots are imaginary or when roots are surds, आपको formula use करना ही पड़ेगा. Go for formula. So I'm working with E. The value of B is 2. So minus B is equal to minus 2. So minus of minus 2 is 2. ये वाला फॉर्मूला होता है. माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो b का नेगेटिव इज 2 प्लस माइनस रूट ओवर ये रहा आपका डेल्टा. दिस इज डेल्टा माइनस 48 अपॉन 2 into 1. ना 48 में जितना आप निकाल सकते हो निकाल लो. 48 इज 4 into 4 into 3. तो आपका हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 रूट 3 आई. जो रूट ओवर माइनस 1 होता है दैट इज इक्वल टू आई और आयोटा. रूट ओवर माइनस 1 इज द इमेजिनरी पार्ट अपॉन 2.
तो 1 + 2√3i एक रूट है, 1 - 2√3i दूसरा रूट है. There are two roots of the equation, both are imaginary. f अगेन सेम मैनर. ये देखो आपकी b की वैल्यू -6 है, यहां पुट करोगे -6, it becomes 6 प्लस माइनस रूट ओवर. What is the value? It is -16. अभी 16 का चीज का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ 4. तो 6 प्लस माइनस 4i/2. So 3 plus 2i, 3 minus 2i. These are the two roots. Imaginary roots and surd roots are always conjugate pairs. अभी आगे और पढ़ेंगे, we'll see that. Take your time, observe whenever you feel dicey है. That is 13. X square minus 2x plus 13. X square minus 2x plus 13. Moving on from these, just for practice, formula use करना, habit डलवाना है. So go on, find the roots of these. Also notice their nature. First thing you can always try is delta. Delta try करते हैं. What is delta for this? Take 2 minutes, give it a try. Delta पहले निकालो for both. Delta पहले निकालो. नेचर पता पड़ गया. बिना उसके आपसे फैक्टराइज होता है इवन बेटर.
So in this, if you notice, first one delta is equal to 0. First one delta is equal to 0, so it is a perfect square. Second one, you see delta is positive but not a square. तो ये सिखाने के लिए क्वेश्चंस डाले गए हैं. देखो, what is delta here? Delta here b square minus 4a into c. So you find this out that this is equal to 400 minus 400, 0. Whenever delta is equal to 0, it is a perfect square. तो अगर perfect square है तो अब यही कहीं खत्म कर दो. What does this look like? This looks like 2x square. तो बीच में क्या होगा आप समझो. बीच में 2 into 2x तो होगा ही होगा. What is extra along with that? 5. और अब देखो, do you have 5 का square in the end? Yes. तो 2x minus 5 whole square is equal to 0. X is equal to 5 by 2, 2.5. So roots are real and equal. It is not said there is one real root. We say roots are real and equal. In second one, if you notice, what is delta? Iska square. 16 minus 4 into 1 into 1. Delta is equal to 12. Delta is equal to 12. So it is not a perfect square. मुझे आपको ये सिखाना था, when delta is more than 0, but delta is not a square. So this is the condition of surd roots. Surd roots. This is called the condition of surd roots. तो भी surd root में क्या होगा? You put minus b plus minus root over delta upon 2a. So आपका बन जाएगा 2, ये बाहर आ जाएगा 2, 2 plus root 3 minus root 3. Again, understand the condition. When delta is more than 0, but delta is not a square, that is where we have surd roots. And notice, like imaginary root, they also appear in pairs. आप देखो, like imaginary roots, they also appear in pairs. ये हमेशा pairs में आते हैं, just like imaginary roots. क्लियर है? गुड. हाँ, स्टार्टिंग तो बेसिक से होगी ना. वंस वी रेज द बार, देन देयर इज नो गोइंग बैक. So again, find the roots and notice the nature. Let me do this for you. Always start with delta. Delta बीच वाले टर्म का स्क्वायर minus 6 का स्क्वायर minus 4 into 4. That is 36 minus 16. That is 20. तो delta is positive. So roots are real and distinct. But क्या होंगे roots? Let us observe. It will be, I'm solving I. The equation will be 6 plus minus root over 20 upon 2. ये rearrange हम कर लेंगे अपने हिसाब से. तो 3 plus minus root 5. These are the two roots. When I talk about J, what is delta here? Delta 8 का square 64 minus 4 into 4 into 7. ये minus minus क्या हो जाएगा? Plus. So 64 plus ये कितना है? 28 into 4. 28 into 4, 112. That is delta. 180, 170, 176. तो करते रहेंगे सॉल्व इसको, नॉट अ प्रॉब्लम. तो
तो क्या रूट्स आएंगे हमारे, -8 प्लस माइनस रूट ओवर। आई कैन शो यू, जब ज्योमेट्री में क्वेश्चंस बनते हैं, जब टीएसडी में क्वेश्चंस बनते हैं ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक, इसी में मिस्टेक्स होते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ सेम काइंड, सिमिलर काइंड फॉर यू गाइस टू प्रैक्टिस। लीव इट देयर, लीव इट देयर, ये आपके रूट्स हैं ए एंड बी, लीव इट देयर। क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्ट करके बेसिक मिस्टेक्स करना मेक्स नो सेंस। Moving on from this, चलो अभी रिवर्सल ऑफ ऑल ऑफ दिस, reversal of all this. The roots are given to you. Whenever the roots are given to you, a and b are the roots. Very quickly we'll finish this. So keep in mind roots. So take 1 minute, complete both. Take 1 minute and complete both. Yeah, network has slowed down. I can see the bitrate has gone down drastically. It will go up. It will go up in a minute. Yeah, stabilized. Solve. Solve. Thank you for the update. Yeah. When roots are available, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं. a plus b बीच में आएगा with a minus sign and a into b आखिरी में आएगा with a plus sign. So what will be the first equation? Simply x square minus 1 by 2 plus 2 by 3x plus 1 by 2 into 2 by 3. No rocket science, कोई rocket science नहीं है इसमें. एक्स स्क्वायर बीच में ये ऊपर जाएगा 3, ऊपर जाएगा 4, 3 plus 4 7 by 6x plus 1 by 3. Cross multiply with 6, 6x square minus 7x plus 2. Your job is done. Equal to 0 कर दो, it's fine. b ये तो आपने सॉल्व किया है. What will be x square minus 4 plus 7x plus 4 into 7. x square minus 11x plus 28. ये ध्यान देना है, बीच वाला साइन इज ऑलवेज नेगेटिव. a प्लस b के साथ में साइन इज ऑलवेज नेगेटिव. a एंड b के साथ में साइन इज प्लस. व्हेन वी कवर पॉलिनोमियल्स, ये वापस हम देखेंगे. ट्राई दिस. C and D, complete this. थोड़ा सा यहाँ पे यू नीड टू नो अ बिट अबाउट वर्किंग ऑफ इमेजिनरी वैल्यूज. कभी आपको अगर ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़े a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, it will turn into a square plus b square. कभी आपको a plus b मल्टीप्लाई करना पड़े with a minus b, it will turn into a square minus b square और vice versa. तो इमेजिनरी वैल्यूज को थोड़ा हैंडल करना सीखते हैं. व्हेन यू मल्टीप्लाई a plus ib and a minus ib, थोड़ा साइन पे ध्यान दे दो.
तो ये क्या बन जाएगा आपका थर्ड वन एक्स स्क्वायर माइनस, नाउ इनको आप देखो वन ऑफ द रूट इज गिवन -5y, तो other one you can assume as 5y because they always appear in pairs, addition of roots. आखिरी में क्या बन जाएगा 2 minus 5y multiplied by 2 plus 5y. It becomes x square, addition of both 4x. ये ध्यान देना when it is a minus ib a plus ib multiply होके स्क्वायर बन जाते हैं, तो it will be 2 square plus 5 square. So x square minus 4x plus 29 is equal to 0. It is true about third root also. They appear in pairs. D आप चाहते हो सॉल्व करना, तो देखो अगर ये पेयर में बनेगा तो हमेशा प्लस माइनस कैंसिल होके क्या बन जाएगा डबल ऑफ द फर्स्ट पार्ट 6x, और जब मल्टीप्लाई करोगे आप इनको देखो इट इज a एंड दिस इज b, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है 9 माइनस 7 इज 2. ये आपके इक्वेशंस हैं. Moving on from this, it must have stabilized by now. चलो let us build up. ये तो बड़ा आराम से आप कर दोगे. e एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5x, और आखिरी में आ जाएगा -4 इंटू 5. So that is for me x square minus x minus 20 is equal to 0. ये वाला थोड़ा ट्राई करो आप लोग. ट्राई f for f. Now आंसर देना is little difficult for you. टाइप कैसे करोगे, टाइप नहीं हो पाएगा आपसे. तो इन दोनों को ऐड करना है. रूट्स बहुत क्लियर लिखे, इन दोनों को ऐड करना है. प्लीज ऑब्जर्व, ये आपका a प्लस बी और ये a माइनस बी. व्हेन यू ऐड दीज ये आपका डबल o के बीच में आ जाएगा. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x. आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज, आखिरी मल्टीप्लाई आएगा तो पहला टर्म भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी 2√3 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18. So the equation will look like x square minus 4√3x minus 6 is equal to 0. X square minus 4√3x minus 6 is equal to 0. Absolutely. तो ये पेन चलाने के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ये कर लेंगे आगे, नॉट अ प्रॉब्लम. ये आगे देख लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. जे एंड एच. चलो, सो ट्राई दिस.
what is being said is, given that this quadratic equation, for what value of a will the sum of squares of roots be 0? What is 0? Let us say ये a है, तो आपको confusion now. I'm using alpha and beta are the roots here. We are saying a के कौन से वैल्यू के लिए this will be 0? For what value of a will this be 0? And I can show you n number of applications of such questions, such approaches in CAT in recent years also. तो ये 0 कब होगा? अब देखो, what we deal with in quadratic equation is addition of roots. In this case क्या होगा? Minus of this term upon first. Addition of roots is this. And multiplication of roots. What is multiplication of roots? This term upon first. ये आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन है. तो इन दोनों को कंबाइन करके हाउ कैन यू जनरेट दिस? सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा. आप कह रहे हो ये 0 है, यू आर टेलिंग दिस इज 0. 0 पुट कर दो यहाँ पे 0. तो व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड मी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, a माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, ये आ जाएगा आपका. तो यू आर टेलिंग मी a माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2. अब एक बात सुनो, अब इसको ओपन करके सॉल्व करना इजी है या वैल्यू रिप्लेस करना इजी है? वैल्यू रिप्लेस करो. इफ आई टेक माइनस 2, if I take minus 2 and put it here, ये हो जाएगा minus 5. I'm checking option A. minus 5 का स्क्वायर 25. Put minus 2 here. minus 2 minus 2 minus 4. Is it anywhere near? नहीं, cannot be. हमें A का वैल्यू चाहिए. For what value of A will this be 0? कर दिया ना आपने 0. देखो इसको. If I put 3 in this, तो ये लेफ्ट साइड खुद 0 बन गया. When I put 3 in this, ये बन जाएगा 1. Is 0 equal to minus 1? No, ये कट गया. When I put 6 in this, अगर 6 रखेंगे इसमें तो it will become 3 का स्क्वायर. When I put 6 in this, तो ये बन जाएगा 4. Is 3 का स्क्वायर equal to minus 4? No. So what is the value of A? None of these. हाँ बेटा, ट्वाइस भी कर दोगे आप अगर ट्वाइस भी कर दोगे, ये ट्वाइस भी कर दोगे आप, तो देखो ना, लेफ्ट साइड में ऑड है, राइट साइड में इवन है. लेफ्ट साइड में इवन है, राइट साइड में ऑड है. लेफ्ट में ऑड है, राइट में इवन है. तो अगर मैं 2 भूल भी गया वहां पे इवन, देन नन ऑफ द वैल्यूज मैच. हाँ, ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करने एग्जाम में. But the only idea was how do you connect the given information with the required information. आपका था delta alpha square plus beta square 0 होना चाहिए. How do I connect that with what I have here? Alpha plus beta square alpha into beta, दोनों से कैसे कनेक्ट करेंगे? तो स्क्वायर कर दो फॉर्मूले का. None of these values match here. चलो, now this is थोड़ा सा new. This relates more with functions. I can show you questions in functions dealing with this, but कि quadratic का है तो अभी एक बार देख लेते हैं. What is being given to us? ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है. तो यू मस्ट फाइंड अ न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2. तो सबसे पहले क्या मैटर करता है? कैन यू एक्चुअली फाइंड रूट्स? आप अगर रूट्स फाइंड कर सकते हो दैट इज बेस्ट. नहीं फाइंड कर सकते, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर सर्ड्स, तो उसका अलग मेथड है. पहले यू टेक अ मिनट, गिव इट अ ट्राई. टेक 1 minute, give it a try.
तो देखो एज यू कैन क्लियरली सी दिस लुक्स लाइक एक्स स्क्वायर, थोड़ा संभल के, दिस लुक्स लाइक 1 + 4 into x and the last one looks like 1 into 4. आपके जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो 1 and 4 नहीं है, योर रूट्स आर -1 and -4. यही छोटे छोटे मिस्टेक्स होते, दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड these examples for you. Here this can be written as 1 + 4 and this can be written as 1 into 4. Roots are not 1 and 4, roots are -1 and -4. आपको अभी क्या चाहिए, अल्फा +2 चाहिए, बीटा +2 चाहिए. तो क्या हो जाएगा, -1 + 2 is 1, -4 + 2 is -2. अब आपके जो इक्वेशन बनेंगे उनमें बीच में एडिशन होता है, माइनस साइन प्लस एडिशन ऑफ रूट्स. तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2x, और आखिरी में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. सो योर इक्वेशन इज x² + x -2 = 0. ये आपका न्यू इक्वेशन है. It is possible for me to find roots. I will find roots and work with it. It is possible for me to actually find out both roots. I'll find roots and I'll add 2 to them and I'll find a new equation. बीच में क्या होता है, sum of roots. In the middle we always have, ऐसा लिखा होता है फॉर्मूला, x minus sum into x plus product. अब मैं आपको सेम आंसर लाना सिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना. This is the functions approach. We transpose the function to different variable. First observation. Is it symmetric operation in both? Yes, there is a symmetric operation in both. आप ऐसा करो, आपको जो पहला फंक्शन दिया था that was this. इसमें वॉट एवर द रूट्स आर अल्फा बीटा वो पुट करके 0 बन जाता था फंक्शन. दैट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स, पुट करने 0 बन जाएगा. अब मुझे क्या चाहिए, देखो, आई वॉन्ट x टू बी इक्वल टू द न्यू वैल्यू ऑफ द रूट. सो आई कैन से अल्फा इज इक्वल टू x -2. इसमें अल्फा पुट करने पे 0 होता था. व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू x -2. आप इसमें इस इक्वेशन में x -2 रख दो. आई विल री एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी, डोंट पैनिक. एक्सपैंड दिस, x² -4x + 4 + 5x -10 + 4 = 0. तो देखो ये 4 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, x² + x बन जाएगा 4 + 4 8 -10 -2, ये बन जाएगा 0. This is a universal approach. You don't need to find roots. क्या करना है, पहले आप ऑब्जर्व करो that it is alpha +2 and beta +2. तो किसी भी एक को लेके x के बराबर कर दो, अल्फा इज इक्वल टू x -2, और ओरिजिनल वैल्यू में पुट कर दो, तो यू हैव द इक्वेशन. When roots are imaginary, when the roots are surd, this is a better approach to find a new equation. When the roots are imaginary or surd, इसमें एक ही रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशन मस्ट बी सिमेट्रिक इन बोथ अल्फा एंड बीटा. आप उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, यस, तो गो अहेड. क्लियर है, कंफर्म? चलो, try the approach I showed you here.
अभी हमें नया इक्वेशन चाहिए वेयर द रूट्स आर 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1. I solved it with the first method because I wanted to see the method works. The equation here and the equation here are same. The method works fine. Try. करना क्या है आपको? You can directly say 2 alpha minus 1 is equal to x, alpha is equal to x plus 1 by 2 और इसको सीधे पुट कर दो. x plus 1 by 2 whole square 5 into x plus 1 by 2 plus 4. खत्म आपका काम. अब ये देखो डिनोमिनेटर इज 4 तो एक बार 4 मल्टीप्लाई भी कर दो. दिस बिकम्स x प्लस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. मैंने 4 लगा दिया बाहर से. 4 यहाँ पे आ कैंसिल हो जाएगा. इट विल बिकम 10x प्लस 10 और 4 यहाँ के आ जाएगा, बन जाएगा 16. सो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0. ये आपका इक्वेशन है. The roots of this equation are 2 alpha minus 1 and 2 beta minus 1. आप let us say verify करना चाहते हो. Sir, I am not sure. ये सही है. What were the roots? Alpha was equal to minus 1 and beta was equal to minus 4. तो क्या हो जाएगा? 2 alpha minus 1 will become minus 3. 2 beta minus 1 will become minus 9. So what is the equation? X square minus addition of roots. और आखिरी में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स. एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27. अब आप कहोगे सर दिस लुक्स इजी, बट बेटा द मेथड इज फॉर व्हाट क्वेश्चंस व्हेन द रूट्स आर नॉट इजी टू फाइंड. इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द रूट्स. x square plus 12x plus 27 is the equation here. X square plus 12x plus 27 is the equation. The roots are minus 1 and minus 4. Moving on, confirm your answers, confirm your method and answers. बेटा डिनोमिनेटर में ये आएगा ना, देखो डिनोमिनेटर में ये आ रहा है ना, 2 का स्क्वायर 4. अब 4 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आप ये मेथड यूज करो ऑन द राइट साइड. लुक एट द मेथड ऑन द राइट साइड.
नहीं बेटा, एक बार चेक करो, चेक योर कैलकुलेशंस. Both answers are matching, both equations are matching. Method is perfect. वही मैं कह रहा हूं, these are so fundamental things, we are not aware of these methods. चलो, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ अलग से मत सॉल्व करो. देखो, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है. यहां पर क्या है, 1/अल्फा 1/बीटा. डिग्री, इसको डिग्री 2 कहते हैं. क्वाड्रेटिक डिग्री कोई भी हो, जब आप रूट को इन्वर्ट करोगे, 1 करोगे, तो पूरा इक्वेशन इन्वर्ट हो जाएगा. ये वाला 4 आगे आ जाएगा, 4x² प्लस 5x प्लस 1. इसके रूट होंगे 1/अल्फा 1/बीटा. बेसिकली आपने क्या कर दिया, इसमें आपने पुट कर दिया 1/x. उसको रीअरेंज करोगे तो यू विल हैव द सेम थिंग. क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन यू इन्वर्ट रूट्स द कंप्लीट इक्वेशन रिवर्सेस. कैसे, देखो एक बार देखो. लेट अस से आई हैव गॉट अनदर इक्वेशन, 3x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 5. लेट अस से ये आपका इक्वेशन है. अल्फा, बीटा एंड गामा आर द रूट्स. You want a new equation which has got 1/alpha, 1/beta and 1/gamma as roots. 1 चाहिए तो पूरा इक्वेशन रिवर्स हो जाएगा. Either you reverse कोएफिशिएंट और x, आपकी मर्जी है. ये वाला 5 आगे आ जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा. ये वाला 2 आगे आ जाएगा और ये -1 पीछे चला जाएगा. It will become 5x³ plus 2x² minus x plus 3 is equal to 0. It's a universal property. When you invert roots, पूरा equation reverse होगा. Write this down. Let me know you understood this. ये समझा? कमेंट, इज दिस क्लियर? चलो, ये कर लेना आप, ये कर लेना. थोड़ा सा और एडवांस है, इसमें यू विल हैव टू पुट 1 एज वेल. बट इसमें एक छोटा सा इशू है. सी, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, बिकॉज वन ऑफ द रूट इज -1, एक रूट -1 है, लेकिन इसमें -1 रखते ही डू यू सी it becomes non-defined. ये तो सर अनडिफाइंड है. it becomes non-defined. तो क्वेश्चन में फ्रेमिंग थोड़ा गड़बड़ है. आपको 1/अल्फा मांगेगा तो अल्फा का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए था, यहां पर है. तो इसका देयर इज नो इक्वेशन फॉर दिस. हाँ, अभी फॉर दिस यू ऑलरेडी नो द रूट्स. व्हाट आर द रूट्स? यहां तो वैल्यू पता है आपको, -1 and 4. ये रूट है 4, -1 प्लस -4 -5. ये दो रूट्स हैं आपके. दीज आर 2 रूट्स फॉर यू. खत्म कर दो इसको. x² -4 प्लस -5x प्लस 4 इंटू -5. x² प्लस x -20 इज इक्वल टू 0. अब ये सिमेट्रिक ऑपरेशन नहीं है बेटा. इट्स नॉट अ सिमेट्रिक ऑपरेशन. ये अलग रूट है, अलग रूट है. इट इज नॉट सिमेट्रिक ऑपरेशन. तो रूट्स निकाल के ही पुट करने पड़ेंगे. देयर इज नो अदर वे अराउंड दिस.
Chalo. Now, these are the questions on equation with either imaginary roots or surd roots. Roots alpha and beta either are imaginary or they are surd. मतलब अल्फा और बीटा निकाल के आप पुट करोगे, ये बात आप मन से निकाल दो, ये आपसे नहीं होना, ये मत करना, क्योंकि डेल्टा क्या है 36 माइनस 4 इंटू 12, डेल्टा इज माइनस 12. ऑलवेज लुक फॉर डेल्टा फर्स्ट. फटाफट से बी स्क्वायर माइनस 4, डेल्टा इज नेगेटिव, तो रूट्स आर इमेजिनरी. तो व्हाट यू विल डू इज अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री. करो सॉल्व, गिव मी इक्वेशन थ्रू दिस. देखो पहले में अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 चाहिए, इसको लिख लो. सेकंड में क्या चाहिए, 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1. थर्ड में 1/1 चाहिए, तो आप ये लिख लो. आई वांट 4 इक्वेशंस फ्रॉम यू. यू हैव सम टाइम. आई विल गिव यू 1.5 मिनट ईच क्वेश्चन. अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 वाला इक्वेशन एक चाहिए फॉर दिस. सेकंड 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, लिख लो इसको. थर्ड 1/1 तो बड़ा आसान है, तो मैं कर देता हूं आपके लिए. 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये लो हो गया, नथिंग देयर. और ये लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से लिखना. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. सो आई वांट फ्रॉम यू 3 इक्वेशंस. ये रहा पहला, दूसरा एंड तीसरा. You have close to 5 minutes for all of them combined.
So if you notice the very first one here, I will say alpha plus 2 is equal to x, alpha is equal to x minus 2. That is all I have to replace here. और एक हैबिट डालो, you are going to perform a square of this, तो सीधा स्क्वायर ही परफॉर्म कर दो. You are going to multiply 6, कर दो, and you are going to add 12 to this. So x square, this becomes plus 2x, ये 12 and 12 cancel, plus 4. This is your new equation. Job done. पहला वाला, please confirm your equation. क्या रिप्लेस करना है? x माइनस 2 मस्ट बी रिप्लेस. तो x माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये पुट कर दिया 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, तो 6x माइनस 12 आ गया, प्लस 12 कर दिया, तो 12 कैंसिल, जॉब डन. सो दीज आर वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन, बट सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो वो अवॉइड करना ही सिखाना है आपको हमने. 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, उसको रखना है यहाँ पे. तो अब देखो स्क्वायर कर दो, अगर आपको बाय 4 में कंफ्यूजन था, स्क्वायर कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4, ये क्या बन जाएगा? प्लस, ये बन जाएगा 6 इंटू दिस, इसको 6 टाइम्स करना है, सो 3x प्लस 1 बन जाएगा, और आखिरी में इट इज 12. अब बेटा ये 4 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 4 जाएगा यहाँ पे, तो इट विल बिकम 12x, और ये अंदर चला जाएगा, तो इट विल बिकम अगेन 12 प्लस 12. ये वाला 4 यहां जाके बन जाएगा 12, और अंदर जाके बन जाएगा 12. तो व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 2x प्लस 12x, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, this will be added to 25. That is our equation. Moving on. ये वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये वाला आप ट्राई करो, गिव इट अ शॉट. दिस वन विल बी लिटिल डाइसी, थोड़ा डाइसी, क्योंकि थोड़ा अजीब टाइप का इक्वेशन बनेगा आपका. अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, अल्फा इज इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस एक्स. आपका काम है अल्फा को सेपरेट करना, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू अल्फा इज इक्वल टू एक्स. अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. ये आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इन दिस, which is a time taking task. X upon 1 minus x whole square plus 6x upon 1 minus x plus 12. तो क्या होगा बेटर? बेटर आपके लिए ये होगा कि फ्रॉम आउटसाइड यू मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर कैंसिल, ये अंदर आ जाएगा, इट विल बिकम 6x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 12 into 1 minus x whole square is equal to 0. So x square
plus 6x minus 6x square plus 12 into, यहाँ ध्यान दो, 1 minus 2x plus x square plus 6x minus 6x square. बेटा you need to be prepared. अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं कैट में, तो ये माइनस 6x स्क्वायर यहां से माइनस होके विल बिकम 6x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 7x स्क्वायर plus 6 minus 24x, so minus 18x plus 12 is equal to this. That is your new equation. The roots are alpha upon alpha plus 1, beta upon beta plus 1. बढ़े आगे. Confirm your equations, confirm your answers. The bitrate is down at my end. It's internet issue. Give me a second. Let me switch the network. I think it would have restored by now. Try this. Try this. Let us try this one.
Here, because it is not a symmetric operation, two roots do not seem symmetric. Alpha into beta is equal to 12 and alpha plus beta is equal to -6. तो क्या होता है इक्वेशन? माइनस ये एक रूट है और ये भी एक रूट है, तो दोनों का एडिशन आएगा और आखिरी में क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो ये वाला एक्स स्क्वायर -6x -72 इज इक्वल टू 0. ऐसा इक्वेशन बनेगा. ये लव इक्वेशन लाइक दिस. ओके ओके, इट्स मैनेजेबल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो, so go on, give it a try. Very simple, very easy question. For what value of m will the equation have equal roots? m के कौन से values पे we will have equal roots? Now see, I have checked network. I have also tried my hotspot. It is not the issue of bandwidth at my end. It is a problem with the server itself. The bitrate is fluctuating very drastically. At my end, the upload and download speeds are in MBs, 30 and 40 MBs.
So I am looking for the value of m for which the roots will be equal. Roots will be equal. So very simple condition. सीधा सीधा solution पे आओ. And when are the roots equal? Roots बराबर कब होते हैं? When delta is equal to 0. What is delta? इसका square. b square minus 4 ac is equal to 0. ये होता है तो वैसे roots are equal. तो इसको भी आपको अगर सॉल्व करना है तो यहां देखो, दिस इज 4 एंड दिस इज 4. 4 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो. अंदर क्या आ जाएगा? m माइनस 4 का स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16. ये वाला 4 बाहर जा चुका है. माइनस 2m इज इक्वल टू 0. तो ये 4 कट गया, हटाओ उसको. m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 16. अब देखो दोनों का एडिशन 10 दिख रहा है यहाँ पे आपको. एडिशन इज 10 एंड मल्टीप्लीकेशन इज 16. माइनस पे ध्यान मत दो. हमेशा एडिशन ऑफ रूट्स द साइन चेंजेस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इट रिमेन्स सेम. तो दो नंबर ऐड होके 10 बनते हैं, मल्टीप्लाई होके 16 बनते हैं. दैट इज ओनली पॉसिबल विद द ऑप्शन बी, बॉम्बे. Moving on. Try the next one. This equation has no real roots. This equation has no real roots. What can be said about P? P के बारे में आप क्या कह सकते हैं? This equation has no real roots. This equation has no real roots.
So in this question, we are simply saying no real roots. No real roots condition क्या होता है? बीच वाले टर्म का स्क्वायर, that is b square minus 4ac is below 0. So minus 4ac, this is below 0. So 25p square minus, थोड़ा ध्यान देना, minus 64 is below 0. So p square is below 64 by 25. यहाँ पे थोड़ा सा you need to understand inequalities. तो सर inequality आपको समझने की जरूरत है. Please observe. Whenever you have a square of a number less than, let us say 4, so the number will be between 2 and minus 2. जैसे मान लो मुझे चाहिए n का स्क्वायर 4 से कम चाहिए. देखो n is equal to 0 चलेगा, 0 का स्क्वायर 0, n is equal to 1 चलेगा, लेकिन n is equal to 2 बराबर हो जाएगा. n is equal to 2 से कम होना चाहिए. वैसे ही जब आप -1 का भी स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर इज 1, तो 4 से तो कम है. जब आप -2 पुट करोगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा. What I'm trying to teach you here, show you here is when a square is below a number, when a square is below a number, it opens in both plus and minus. देखो ध्यान दो, ये सीखो, ये आपका इनइक्वालिटी में भी काम आएगा. बढ़िया सीख लेते हैं. So when you take a square root, तो आपका जो p आएगा, it will be between 8/5 and minus 8/5. तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी. Confirmation on this? C is the answer. C is the answer.